Hey Sassy Nari, welcome to Little Fixes. This is your host Maktri, a social media professional, a mother, and a simple yet sassy woman just like you. Join me for 3 simple and practical ideas that help you in transforming into your best self. This mental health and personal growth podcast is a reminder that you matter. Hello Sassy Nari, thank you for joining me today. I have had a constant backache for over 10 years now. Even though everything looks fine in the MRI scan, my back issues refuse to go away. Then last year, I started getting knee pain too. The doctor gave me supplements and suggested avoiding squats, lunges and even palthi laga ke baithna. He also said that 36 was too young for this issue, so I'll heal slowly. कुछ आराम तो है, but healing में I think और time लगेगा and I am hopeful. मतलब कभी होता है, कभी नहीं होता है, ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहता है. Most women I know have a bone or joint issue. और मुझे लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा है और हमने ना पेन के साथ रहना सीख लिया है. पर मेरी आज की गेस्ट इस एक्सेप्टेंस के टोटली अगेंस्ट हैं. उनका मानना है कि पेन्स कैन बी क्योर्ड और आज वो हमें बताएंगी कि कैसे. मेरे साथ हैं शशि सारदा, हु इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड अ स्पाइन स्पेशलिस्ट. वील टॉक अबाउट कि कौन से बोन इश्यूज वुमेन में सबसे ज़्यादा कॉमन है, बोन हेल्थ में फूड, एक्सरसाइज, आयुर्वेदा, योगा का क्या रोल है और कैसे हम अपने बोन्स को ज़्यादा टाइम तक स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं. बिफोर हियरिंग फ्रॉम शशि, प्लीज फॉलो लिटिल फिक्सेस ऑन योर पॉडकास्ट ऐप एंड रेट एंड रिव्यू अस ऑन स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट. इट हेल्प्स अ लॉट. एंड नाउ टू अवर गेस्ट. हाय शशि, वेलकम टू लिटिल फिक्सेस. Hi, Matri. Thank you so much for having me over. It's really amazing sitting and chatting with you right now. आई एम Yes. ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने जैसा कि अभी बोला भी कि मेरे साथ ये सब इश्यूज हैं. मे बी आई विल फाइंड समथिंग वेरी यूजफुल फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. तो शशि, बिकॉज यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर ओवर 13 ईयर्स नाउ, आपने बहुत सारी विमेन के साथ काम किया होगा. आई वुड लाइक टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज दैट यू हैव सीन, बोन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो आपने विमेन में सबसे ज्यादा देखे हैं अभी तक. As you said, Matri, past 13 years I've been in the field of bone health, spine health, orthopedic health. मैं आप सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज जो नोटिस कर रही हूँ is जब मैंने शुरुआत की थी मैं मोस्टली आई यूज्ड टू सी सीनियर सिटीजन्स, ज्यादा करके सीनियर सिटीजन्स आते थे फॉर कंसल्टेशन, फॉर कैंप्स, फॉर वर्कशॉप. एंड ज्यादा करके सीनियर सिटीजन्स का यही इशू रहता था, घुटने का दर्द, बैक एक, चला नहीं जा रहा है, ब्लोटिंग, arthritis, osteoporosis and stuff like that. But you will not believe, over the past so many years, as I keep moving from every year to every year, now the senior citizen age is now moved on to actually much more younger age. And especially women and male, in fact, both. Initially, it used to be more women because as we've already seen, even our दादी नानीज अपने बड़े घर में भी जो हमेशा रहते थे, हमेशा हमने लेडीज को ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है. ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, नीचे नहीं बैठा जा रहा है. Men are little more active. In previously in our houses we have seen that. पर अब मैं देख रही हूँ कि men are also equally coming, women are also coming, and at a much younger age. In fact, I see a drop in the senior citizens age, and I see a rise in the middle age, probably from even as young as I've seen CA students who are studying CA, who may be just around 19, 20 or 22, 23. And they are also coming with such severe stiffness in the body, stiffness in the back, stiffness, pain. A lot of people from media industry, young adults from media industry, because of their lifestyle, and they're having long standing hours or long working hours. Also, a lot of people from the hairstyling industry who are standing for long hours with direct impact on the back, on the bone. So a lot of youngsters coming in. In fact, lot of youngsters coming in with lot of pain in the हम्म. सो आपने बोला कि अभी मेल में भी ये इश्यूज बहुत होने लगे हैं. Hmm. बट अगर हम यंगर वुमेन की भी बात करें, जैसे इट इज सेड कि जब आप पेरी मेनोपॉजल होते हो या आपका मेनोपॉज हो रहा होता है, हो जाता है, तो वुमेन में बोन इश्यूज बढ़ते हैं. बट अभी जैसे कि यंगर वुमेन में भी आप ये इश्यूज देख रहे हो, तो व्हाट डू यू फील? जैसे आपने बोला अभी कि खड़े ज़्यादा देर रहना पड़ता है, बैठे ज़्यादा देर रहना पड़ता है, तो मुझे एक तरफ ये भी लगता है कि इट इज़ ईजियर सेड देन डन कि सेडेंटरी मत रहो, बिकॉज Hmm. वो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है. अगर मुझसे किसी ने बोला है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है और मुझे उसमें 3 घंटे लगने वाले हैं, तो आई वॉन्ट टू फोकस फॉर दोज 3 आवर्स.
ये नहीं correct. कि बोला जाता है कि भाई 1 घंटे बाद उठ के थोड़ा-सा वॉक कर लो। बट कई बार क्या होता है कि अगर आपने रिमाइंडर भी लगा रखा है फ़ोन में, बट जैसे ही रिमाइंडर बजता है यू आर लाइक नहीं, नहीं अभी नहीं उठ सकते बिकॉज़ यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, यू जस्ट गॉट सम थॉट, तो आप नहीं उठ पाते हो Correct. और आप 3 घंटे तक बैठे ही रह जाते हो। तो कई बार Correct. ये प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। तो व्हाट यू फील कि फिर ऐसा लाइक आपने देखा भी कि ये इश्यूज़ बढ़ रहे हैं और किस वजह से बढ़ रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? सो आई अग्री मैथिली, जो आप बोल रहे हो कि इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अब पहले क्यों अभी हम यंगस्टर्स को ज्यादा देख रहे हैं? बिकॉज जॉब्स डिमांडिंग हो गए। पहले हम सीनियर्स को ज्यादा देखते थे क्योंकि उनके जॉब्स नहीं थे, वो घर घर गृहस्थी में थे। सो दे टू डू अ लॉट ऑफ लेबर, फिजिकल लेबर, और उसके कारण उनके इश्यूज होते थे। नाउ जॉब्स आर डिमांडिंग, इसलिए उनके कारण उनके अदर हेल्थ इश्यूज होते हैं। एंड एज यू सेड, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अगर किसी का हेयर स्टाइलिंग का काम है तो वो 8-10 घंटे, 12 घंटे खड़ा ही रहेगा या खड़ी ही रहेगी। उनके पास चॉइस है, बीच बीच में एक बार थोड़ी देर बैठ जाए, या मीडिया इंडस्ट्री में है वगैरह में। आई अग्री कि चॉइस नहीं है, जॉब्स आर डिमांडिंग, बट देर आर वेज टू वर्क अराउंड। सो हुँ, जैसे हम योगा में बोलते हैं कि आप अपने शरीर को 24 आवर्स में से अगर 45 मिनट्स भी देते हैं, सो 23 आवर्स 15 मिनट्स वो आपका ध्यान रखते हैं। हुँ, तो अगर हम दिन भर में, in the whole day, if we make a regime, if we make a routine of working on our joints, on our bones, on our muscular skeleton, working the yoga posture, asanas, pranayam, in the way that the body is always supple, always mobile, always flexible, always transformable. So in that case, after that, if you put that pressure on the body has more endurance capacity, the body has more strength to take in that practical job pressure that you're seeing. तो सपोज आई हैव अ सेडेंटरी लाइफ, जिसके कारण मेरा बैक में पेन हो रहा है, जिसके कारण मेरे डिस्क कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते हो। बट आप ऐसा तो कुछ कर सकते हैं कि जिससे हम 24 आवर्स में से 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स अपनी बॉडी को दे दें, ताकि हम बाकी का टाइम फिर उसको कितना भी स्ट्रेन करें, उसमें ताकत हो वो स्ट्रेन लेने की। वेर आई सेड लास्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है इन द यंगस्टर्स बिकॉज वो टाइम नहीं दे पा रहे, वो टाइम निकाल के अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं। सो इट्स अबाउट एवरीडे, इट्स एवरीडे बैजरिंग द पेन एंड नॉट गिविंग दैट स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इट्स लाइक बेसिकली मैं आपको एक दिन भूखा रखती हूँ, आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रॉप करती है, दूसरे दिन भूखा रखती हूँ, थोड़ी ड्रॉप होती है, तीसरे दिन भूखा रखती हूँ, थोड़ी ड्रॉप होती है, सेवेंथ डे यू विल बी कंप्लीटली ड्रॉपिंग, यू वोंट बी एबल टू स्टैंड, यू वोंट बी एबल टू फोकस। हुँ, वही अगर मैं आपको आधा दिन भूखा रखती हूँ, आधा दिन खिलाती हूँ, आधा दिन भूखा रखती हूँ, आधा दिन खिलाती हूँ, प्रोबेबली आप 15 डेज तक चल पाओगे। सो इट्स द होल प्रोसेस। अगर आप अपना थोड़ा, और अगर मैं आपको हर 2 घंटे फ्यूल कर रही हूँ तो आप पूरा दिन चलते पाओगे, चल जाओगे। So the हुँ, same way, this taking care of your body, doing asana practice, doing pranayam, doing especially joint mobility exercises. If you have a job which demands that your joints are going to get stiff, your back is going to pain. You have a lot of, like, some people like architects. I see a lot of architects and designers. Unka generally upper back, shoulder, and neck region is most of the time under pressure and stress. Their job demands always slouching and sitting and designing, or computer laptop designing and all that. Because of that, you'll always see most of the architect designer kind of people will always have pain in their upper region. So if your job demands that, give that strength for the neck and the shoulder to take in that pressure by doing a little bit of time, 15-20 minutes of doing those stretches, so that then you can take care of it the whole. हुँ, हुँ। ओके, तो एक चीज़ मैंने और कहीं पढ़ी थी कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, और उसमें ये भी बोलते हैं कि आप भले ही दिन में 1 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो, बट इफ़ यू आर सेडेंटरी फॉर द अदर 23 आवर्स, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एज़ मच। बट यू आर सेइंग कि इट इज़ लाइक बेटर देन डूइंग नथिंग, राइट? Absolutely. So I totally agree with again what you said. Sitting is the next smoking. Also, when I say sedentary lifestyle, I include this word that 1 hour of exercise but 23 hours of sitting is sedentary. हुँ, I will not call it a non-sedentary life. या। It will be sedentary according to me also, that only if you're giving 45 minutes in the morning and then bhar aap khade ho, या आप बैठे हो, so it is sedentary. So I totally agree that again, in that we have a choice again. If you do that 45 minutes of exercise or asana practice in the morning, believe me, even if you want to, your body won't remain sedentary, because you will be so high in energy that even for the smallest thing, you'll pop up and get out of the chair हुँ, and try it.
Sometimes, if you've not done anything, if we've had a very sluggish week after week, you'll feel that after probably a lunchtime, if you're sitting on some presentation, if you're doing something, you start feeling drowsy and sleepy. And the same day, if you have done some little work on yourself in the morning, you will not feel that sleepiness and drowsiness. You will be a little alert in spite of having that lunch or being in the office space or reading some heavy document. Still, you will not feel that sleepiness. So once you do that 45 minutes to 1 hour work in the morning or in the evening, your body is generally more alert and active. So automatically आई विल नॉट से कि आप सडनली 12 आवर सिटिंग से 2 आवर सिटिंग पे चले जाओगे पर आप हर छोटी छोटी चीज के लिए ऐसे वेट नहीं करोगे अच्छा अभी है ना ये लेने जाना है सो अच्छा लेट मी सिट फॉर हाफ एन आवर वो साथ में ही जाऊंगी और सब करके आ जाऊंगी it won't be that attitude. You will get up, do that work, come back again. So that lifting and getting up from the chair won't be such a challenge for you. Otherwise, if you're like tired, अच्छा थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ. अच्छा 15 मिनट बाद जाऊंगी, तब जब चाय पीने जाऊंगी तभी साथ में दो काम और कर दूंगी. That won't be the thing. So it's as you also mentioned कि शुरुआत तो करें. Then you see how the day progresses. You'll automatically be jumping around like a butterfly. You won't be able to मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बैठ जाओ. ओके ओके सो एक और चीज़ अब मैंने जो पहले भी बोली थी कि पेन के साथ कहीं ना कहीं हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें पेन के साथ ही रहना है तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट कि लिविंग विद पेन इज इट नॉर्मल और पेन मैनेजमेंट जब मैंने आपसे पहले बात करी थी तब भी आपने बोला था कि लोग पेन को मैनेज कर रहे हैं क्योर नहीं कर रहे हैं या उसका जो एलिविएशन है वो नहीं हो रहा है टेल अस योर थॉट्स ऑन दैट So what happens ना जब हम पेन की शुरुआत होती है ना शरीर में कहीं पे भी तो हम थोड़े दिन उसको घर से मैनेज करते हैं. Everybody has got this mentality. थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा हार्ट पैट करेंगे, थोड़ा गुड बाम वाम लगाएंगे, थोड़ा पेन किलर खा के मैनेज कर देंगे. जब वो पेन इतना हो जाता है कि आपकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाती है जैसे उठा नहीं जा रहा है बैठा नहीं जा रहा है वर्क पे ज्यादा देर नहीं बैठा जा रहा है एक्टिविटीज नहीं करी जा रही है if you gone for a probably an evening dancing night you're not able to dance you're supposed to sit because you got a back pain so all these activities जब आपकी रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती है तब हम उनपे जाके अटेंशन देते हैं फिर हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास पूछने के लिए कि क्या हुआ डॉक्टर्स विल गिव द लिस्ट ऑफ diagnosis then they'll probably send you for physiotherapy. You will feel better after the medication. You will do the physiotherapy and medication generally go hand in hand together. You will start feeling much, much more better. And you will go back to the process what you started with. मतलब आपको अच्छा लगेगा जैसे ही आपको अच्छा लगेगा धीरे धीरे आप ढीले हो जाओगे फिर आप अपना इतना ध्यान नहीं रखोगे पहले अगर फिजियोथेरेपी ने बोला है कि दिन में 3 बार एक्सरसाइज करो आप दिन में 3 बार ही करते हो जब फिजियो थोड़ा ठीक होने लगता है आप एक बार तो आराम से भूल जाते हो वेरी कन्वीनियंटली वी लीव दैट एक बार आफ्टरनून वाला तो बहुत कन्वीनियंटली निकल जाता है फिर रात तक जब वापस स्टिफनेस आती है तो शाम वाला याद आता है फिर जब वो शाम की भी स्टिफनेस चली जाती है तो सिर्फ एक टाइम फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करते हैं एंड धीरे धीरे व्हेन योर पेन एंड योर मच मोर बेटर देन यू it's very easy for people to just kind of get into other things and not take care of their whatever the pain so they have not cured it 100% क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन था वो पूरा फॉलो ही नहीं किया जैसे ही दर्द ठीक हो गया वापस भागना शुरू कर दिया काम शुरू कर दिया अब क्या होता है दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से आपका पेन उस लेवल तक नहीं पहुंचता बट वो आता जाता रहता है तो जैसे ही आता है आपको फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज याद आती है आप 4 दिन करते हैं फिर वो ठीक लगता है फिर आप वापस भूल जाते हैं वापस वो पेन किलर जो एसओएस डॉक्टर ने दी है वो याद आती है वो आप लेते हैं फिर भूल जाते हैं सो दैट्स व्हाई देन इट कम्स टू अ स्टेज वेर आप सिर्फ उसको मैनेज करते रहते हैं बिकॉज अब आप है ना पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख गए आपको ना डॉक्टर की जरूरत है ना फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है आपको पता है कि मेरे इतने पेन पे मुझे एसओएस वाली दवाई लेनी है और इतने पेन पे मुझे 2 बार फिजियो करना है या 3 बार फिजियो की एक्सरसाइज करनी है या एक बार कर दूंगा और कब मुझे सब कुछ छोड़ देना है so you become an expert in pain management but you have not even thought once कि ये पेन आ क्यों रहा है और मैं इसको पूरी तरह से क्यों नहीं निकाल देता हूँ why after week I have to keep doing this juggling why don't I work on it from the root cause from all angles and just get it out because after this whole management process you realize that पेन तो ठीक होना ही नहीं है because हमने पेन ठीक की स्टेज देखी नहीं है we have just become expert in our management because we don't know that there is something called as pain free and you can stay pain free
बिकॉज आपने वो देखा ही नहीं है तो आप वहां पहुंचोगे नहीं, राइट? सो आप हम्म, अप्रोच ही नहीं करोगे वो एरिया को। इफ आई टेल यू मैत्री, बॉम्बे के राइट साइड में बाहर एक अलग स्टेट बना है, आपने कभी देखा ही नहीं है, तो आप सोचोगे कभी मैं हॉलिडे पे वो एक स्टेट में जाऊं या वो एक सिटी में जाऊं? आपको जो पता है प्रॉब्ली अलीबाग, लोनावला, माथेरान, आप वही वही का अपना देखते रहोगे if you want to go for a holiday. But हम्म, now suddenly I tell you कि no, Vaishali, there's a beautiful place or a beautiful countryside which has come up next to Bombay. Then you will try and see, Acha, Shashi was saying, let me explore that area. Let me see, she was saying it was very nice. When you go there and you see, oh wow, this is very beautiful, this is very nice. हम्म, So the problem is कि वो जो ब्यूटीफुल एरिया है उसको बताने के लिए आपको शशि जैसा कोई चाहिए। द सेम वे आपको ये बताने के लिए कि आप पेन फ्री रह सकते हो, जो उनको पता ही नहीं कि वो एक स्टेज आ सकती है, कोई ना कोई चाहिए जो आपको वॉक द पाथ करा के वहां तक ले जाए और बोले कि देखो, आपको हम्म, 10 साल से पेन था, आपने 3 महीना अपने पर काम किया और आपका 10 साल पहले का पेन पूरा खत्म हो गया। अब आप नाच सकते हो, जंप कर सकते हो, बंजी जंपिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो और आपका पेन वापस नहीं आ रहा है। हम्म, तो वो समझाने के लिए, वो बताने के लिए, you need someone to guide you that there is a phase or a stage which can be painful. हम्म, Probably some people don't have the knowledge, some people don't know, and some people have done so much in the whole process of pain management that somewhere they've lost their faith only that pain manage करके ही होने वाला है, ठीक नहीं होगा। हम्म, And the problem, Maitri, is now that even the youngsters have started thinking that. I mean, at the age of 60 and 70, you think कि अरे चलो ये तो दर्द अब मेरे साथ ही जाएगा. I can understand. Fine. There are a lot of elders, you will hear them saying कि आप क्या ये दर्द तो अब ऐसे ही रहने वाला. But हम्म, if a 30-year-old, a 40-year-old and a 45, 50-year-old starts to think that कि नहीं यार, I have to manage this pain, यार, this has become a part of my life, then it's saddening to see. Because no, it's there are options beyond that. You can become pain free. हम्म। Okay, and what is your approach to cure, the cure of this pain? We'll talk about food, Ayurveda, and everything else, but अभी क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो what is your approach? So if on a personal note, if you ask me, I've also had, as I just mentioned to you some time back also, that I've had all kind of health issues, all kind of pain issues. I've had cervical spondylitis, I've got back pain, I've got a sciatica pain, I've got a muscle tear in the back also, I've got plantar fascia. So again, my quest to get pain free was very high because sciatica pain was disturbing my life. I want to play that dandiya in my Navratri. I want to dance to a party song. I want to go out and travel. But if this sciatica pain is going to trouble me with everything, then I have to get it out. And that's when I went into yoga. That's when I understood yoga. And that's when I realized that there is much more to than those 5 stretches, 4 stretches. कि ये इतना कर लो sciatica के लिए. Mm-hmm. It's not, as you said, it's not only about the physical pain. It's a lot to do with your mental space also. It's how you think impacts your body. At what thought your pain triggers. At what thought your pain releases. Like a cervical spondylitis, the moment there is a stress, the cervical will go blocked like this. The whole shoulder, back will go completely jammed. And you take them out for a holiday, take them out to the mountains or to the beaches where it's completely relaxed. And you suddenly feel that pain है ही नहीं body में. So, this is like a simple example, like a shoulder pain. When we say a cervical spondylitis, it's just generally the first thing that I will ask you is what kind of a personality you are. And 8 out of 10 people are the responsible types. Mm-hmm. So when I talk about responsible types, they are very responsible people and who love to shoulder responsibilities, who are the leadership kind, who always want to take up new chores, new activities, new events, new work on their shoulder, and they want to, and they're very good people to kind of responsible people, जिसके ऊपर आप काम छोड़ सकते हो और आपको पता है कि वो काम हो जाएगा, वैसे लोग हैं। पर उनको पता भी नहीं चलता है कि बीइंग रिस्पॉन्सिबल इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि वो उनके शोल्डर ही दबने लग जाते हैं, Mm-hmm. उनके शोल्डर उनकी नेक में ही स्पैजम आने लग जाता है. So somewhere they need to drop that or just be relaxed. Like in shoulder and cervical pain, I tell a lot of people, I said आपके पास दो ही चॉइस है, या तो इतना ही वजन उठाओ जितना आपका शोल्डर ले सकता है, पर अगर आपको वजन ज्यादा उठाना है और ज्यादा उठाने का शौक है,
तो अपने शोल्डर को स्ट्रांग, Mm-hmm. Mm-hmm. पर दोनों में से एक करो। शोल्डर स्ट्रांग किए बिना वजन उठाओगे तो तकलीफ में हो, Mm-hmm. और जितना शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है उससे कम लोगे तो भी आपको तकलीफ होगी, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल काइंड. Yeah. So it's a lot to do with how your mind thinks also. And in most of the pain management process, what we really miss out is the whole mind management process. Of course, diet and everything else plays a lot of importance, but mind is something that we completely miss out. उसको उसके ऊपर हम ध्यान देते नहीं, हमको लगता है पेन है तो फिजिकल है, उसका Mm-hmm. मेंटल से कुछ लेना देना नहीं. और वो एमआरआईज और एक्सरेज में दिख जाता है कि ये यहाँ बल्ज हो रहा है, वहां बल्ज हो रहा है, वो नर्व प्रेस हो रही है, वो नर्व पिंच हो रही है. इट बिकम्स मोर एंड मोर फिजिकल authentic because you have a report in front of you. Mm-hmm. So because it's a physical authenticity, you don't even look at the mind aspect. Mm-hmm. So that's why it's very important that in pain management there are some missing links which you have to understand. And वो सोच समझ मतलब उसके, अब अगर आपने सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर सोचो क्यों नहीं हो रहा, अब क्या करना चाहिए, क्या बाकी रहेगा. इट्स लाइक अ जिक्सो पजल. आपने पूरा फिक्स कर दिया, 5 पीसेस मिसिंग है. अब वो 5 पीस ढूंढना तो पड़ेगा ना उसको फिट करने के लिए. टिल यू डोंट फिक्स दोस 5 पीसेस, आप आपका जिक्सो कंप्लीट होगा ही नहीं. Okay. And what you're saying is reminding me of that book, You Can Heal Your Life by Louise Hay. उन्होंने भी इसमें यही सब एब्सोल्युटली. बताया है कि जो या. बॉडी में जो जो इश्यूज हैं वो किस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं. तो व्हेन यू गो अबाउट वर्किंग विद समवन, यू वर्क विद देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज एज वेल, राइट? Absolutely. It's a complete holistic approach. It's a lot of therapeutic yoga, therapeutic pranayam, mental issues which are triggering the pain. So to resolve those issues so that the trigger stops, so that when we are working on the physical and the physiological level, which is through the pran shakti, through the breathing. So if you're working on the physical level and the physiological through the pranayam and the yoga asanas, if every day there's one thought which is going to trigger that pain every day, then my work which I'm doing on the physical level will go waste. So I Mm-hmm. have to make sure that the entire process is worked. Then the entire nutrition part has to be taken care of because that's very important to heal, cure you from inside. Because finally आपके cells को oxygen और food ये दो से ही nourishment मिलता है. So oxygen का ध्यान हम रखते हैं with the pranayama practice, with the breathing techniques, with putting the breath to the area which is in pain. So suppose I have a neck pain, so putting the breath inside the spine, putting the breath in the lower back, putting the breath in the mid back. Mm-hmm. Yeah. So simple things like thoracic pain किसी को है, अगर mid back में pain है, so अगर सिर्फ slouch करके आप बैठ जाओ थोड़ा सा, just like this, if I slouch and I sit and I do deep breathing, my entire, because of my slouching, my lungs are slightly collapsed, so my entire breath is going to go in the mid back, and you can experience it and see it. अगर मैं स्लाउच करके बैठूं और अगर मैं इनहेल और एक्सहेल डीपली करूं, आप देखोगे आपका ब्रेथ आपके थोरैसिक रीजन में जाए, तो अपने आप वहां की एरिया खुलती है. Mm-hmm. ओके, एंड यू ऑल्सो मेंशन न्यूट्रिशन पार्ट. तो या. अब हम फूड के बारे में ही बात करते हैं. जैसे बोन हेल्थ इश्यूज हैं, इन सब में बोला जाता है कि दूध पियो, विटामिन डी लो, एंड आई थिंक मैग्नीशियम का भी कुछ रोल बताया जाता है, और सप्लीमेंट्स ऑब्वियसली ये बोला जाता है. साथ ही बोला जाता है प्रोटीन लो, और बोला जाता है कि शुगर मत लो क्योंकि शुगर डिटेरियोरेट्स योर बोन, और हीट पैक लगाओ, स्टेरॉइड्स लो विच आई थिंक एवरीवन नोज कि आर नॉट ग्रेट फॉर यू. तो ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं हमें. तो हाउ हाउ डू यू सी ऑल दिस फूड थिंग कि कौन से फूड हमें लेने चाहिए, दूध पीने से होता है कि नहीं होता? बिकॉज नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो अगेंस्ट मिल्क for different reasons, hormones and everything. And so what are your views on nutrition regarding our bone health? Well, in that case, Maitri, what I would say is कि I agree, दूध नहीं पियो, because there's a lot of information overload right now. Obviously the cows are being injected, and that's why the milk is bad, or whatever, whatever. Go vegan and everything like that. What I feel, you should, and your body should be used to everything in bits and pieces. If you go completely vegan and go stop dairy totally, I'm not personally for it. Hmm. I agree. If you say that I'm going to substitute my yogurt with something else, if I'm going to substitute my milk with soy milk or almond milk or whatever,
So when in that case, if milk is getting adulterated, even soy is getting adulterated. That's exactly what I think कि plants में भी Yeah. तो pesticide, insecticide सब कुछ होता है. सब कुछ है, सब कुछ है. Every entire thing, every crop, everything that's happening, everything is getting infected or Hmm. pesticides, whatever. So if you think ये उससे better है, it is better than the worst if you want to select it that way. Then it's better that you stick to your basics and don't make your body not used to certain things. जब हम कुछ चीजें खाना छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं ना, बॉडी फिर उसका रेजिस्टेंस तैयार, मतलब बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू इट. जैसे डेयरी छोड़ दोगे तो डेयरी रेजिस्टेंट हो जाएगा, ग्लूटेन छोड़ देंगे तो ग्लूटेन रेजिस्टेंट हो जाएगा. तो फिर बाद में जब हम प्रॉब्ली 1-2 साल बाद कभी ऐसी जरूरत पड़ कि हम खाना ही पड़े, तो right now we have a lot of options of vegan cafes and healthy cafes, and probably only in the big cities. In the Hmm. 2 tier, 3 tier, we don't even have those options. So because we have options, we opt to do that. But what about sometimes if you have to go to a certain place where there is no option? And suppose your body is resistant towards it. And then when you have gluten, you suddenly feel bloated, suddenly feel uncomfortable. So adulteration sab mein hai. Let's accept that. So even in the almond milk there is adulteration, soy milk also there is adulteration, and normal milk also there is adulteration. So Hmm. manage in such a way that your body gets used to those adulterated foods and you have a mix of everything. You are not left anything and you are not taking anything excess also. Hmm. So it's always good to keep your body in harmony to everything that's happening in nature. Agar outside is adulterated, even our bodies are also adulterated. Even Hmm. our bodies are not the same kinds what we our elders or our Hmm. grandfather or great great grandfather mother की bodies थी. तो उनकी bodies जैसे थी, उनका खाना वैसा था. खाना Hmm. प्योर था, बॉडी प्योर थी. हमारा खाना थोड़ा इम्प्योर है, बॉडी इम्प्योर हुई. अब खाना और इम्प्योर हो रहा है, हमारी बॉडी और इम्प्योर हो रही है. सो लेट्स बी इन सिंक, नो. जैसे हम योगा में, जैसे हम सिंपल थिंग लाइक अगर हमको जल नीति करना है योगा में, तो हम वाटर जो एक्सटर्नल वाटर हम अपने नॉस्ट्रल्स में डालते हैं, वी मेक इट पैलेटेबल फॉर द बॉडी टू एक्सेप्ट इट. Hmm. सो सपोज इफ सो मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि स्विमिंग पूल में आप कई बार पानी नाक में चढ़ जाता है, यू फील दैट झंझनाहट. या शावर में पानी नाक में चढ़ जाता है, यू फील दैट झंझनाहट. व्हाई? बिकॉज दैट वाटर इज नॉट पैलेटेबल टू द बॉडी. But if I want to do jalneti, I will make a warm glass, lukewarm glass of water. I will add a little salt to it. I will make it palatable so my body accepts it. Because my body has that 98.4 degree temperature. It has that little salt content because we can feel that in the sweat and the tears. So the moment I do jalneti with that palatable water, my body doesn't throw out. Or I don't feel the jhanjanahat. The same way, बाहर अगर adulteration है, अंदर भी adulteration है. So let's make it palatable. Let's think about whatever we eat in the right emotion. Rather than thinking, oh my god, ये vegan है, ये ज्यादा sugar है, इसमें ये है, इसमें वो है. इतना सोच के खाने में ही हमारी energies, emotions इतने गलत हो जाते हैं ना, कि वो खाना जो भी अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा ही. Hmm. तो लॉट ऑफ पीपल आई सी, नहीं नहीं ये खाने से तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और खाते जाएंगे. नहीं, आज मैंने ना एक समोसा खा लिया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. अब वो समोसे से नहीं बढ़ा है, आपने सोच सोच के अपना प्रेशर बढ़ा दिया. सेम वे यार, आज मीठा, आज ना इसने जबरदस्ती, आज उसका बर्थडे था ना, केक खिला दिया. अब शुगर बढ़ गई होगी तो, अरे केक शायद उससे नहीं बढ़ेगी, तो आपकी सोचने से शुगर बढ़ जाएगी. Hmm. So everything in normal quantity is good, and you should keep your body open to accepting everything in normal quantity. When it comes to supplements, I feel you should take supplements. Some people are resistant towards supplements कि नहीं नहीं हम natural sources से सब खाएंगे, हम ज्यादा दूध पियेंगे, हम ज्यादा कर्ड खाएंगे, हम ज्यादा पनीर खाएंगे. We'll take proteins from the natural sources, we'll take calcium from the natural sources. Well, let me tell you again, the natural sources are adulterated, and so is that calcium pill. Hmm. But if the calcium pill can take, after taking that, you feel a little more calcium intake is better, ठीक है, take that one calcium tablet. Hmm. Okay. So, as long as you are not allergic to or have intolerance towards certain foods, you are suggesting that we should eat everything. So, are there any specific food items which you feel are better than others for our bone health? Uh, so the protein intake should be good for bone health as well as the muscle health. So protein, but again, not the whey protein. I mean, not the protein powders which are there available. I don't know about the brands, but something like I would say कि एक मुट्ठी सिंगदाना लो, रात को भिगाओ और सुबह खा लो. Just raw, कच्चा सिंगदाना लो, रात को भिगाओ, सुबह खा लो. It is the best source of protein. Hmm. On an empty stomach.
You can take it on an empty stomach or at 11 o'clock in the morning, whatever suits you, अच्छा. according to the peanut. So some people may find it gassy in the morning to have it empty हुँ, stomach, no problem. उसको खाली अच्छे से chew करना है. अगर हुँ, हम chew अच्छे से करेंगे तो automatically it will not be bloating and gassy in the stomach. हुँ, Or you can take it after your workout. So instead of taking the protein powder or something else, you can take that peanut. So that is a हुँ, very good source of calcium, protein, everything. Calcium के लिए I would suggest if your resistance towards milk is there, then you can have paneer. So if there's that resistance because of the cows and because of whatever adulteration, you can go for paneer. Again, I go for the basic घर का बना हुआ paneer, not that you buy it off the shelf. हुँ, That has more adulteration than what it is. आप घर पे दूध लाओ उसको वो नींबू से लाइन से फाड़ो and उसके बाद उसमें आप थोड़ा sugar mix करो या plain खाओ whatever you like it or you add it like in your sabzis and all and have a good bowl of paneer. Paneer is very good and rich in calcium. That's very good. Till is very good. White and black seasoning both. So in everything add a little till. If you want everyday roti में till डाल दो. अपने आटे में till से गूंद लो. Every day have little quantity so little till goes every day in your body to have that thing. In dry fruits, I five pistachios are good every day. Like instead of almond, I'm not a very big fan of almond. Almond is very high on digestion. हुँ, People are eating almonds and almond flour and almond milk a lot, but almond is very. If you ask any Ayurveda person, they will say कि almond takes the maximum time to digest. That's why almond खाने का तरीका होता है. जब हम almond खाते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से chew करना पड़ता है. उसका हुँ, पूरा पेस्ट मुंह में बनाना पड़ता है ताकि वो पूरा सलाइवा से मिक्स हो जाए ताकि जब वो अंदर जाए तो डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा कम प्रेशर हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए. हुँ, पर प्रॉब्ली हम ये समझते नहीं है. वी जस्ट फील almonds are good. Let's have consume everything of almond flour and this and that. Again, atas like the millets, nachni, jawar, bajri, they are all very good. So stick to the basic sources and do everything in moderation. ऐसे नहीं कि नाचनी अच्छी है तो नाचनी ही खा रहे हैं. बाजरा अच्छा है तो बाजरा ही खा रहे हैं. Like everybody started going for these mixed आटा धान. All that is you don't need to mix it ना. रोज एक एक धान खा लो ना. हुँ, मिक्स या. करके सबकी प्रॉपर्टीज को क्यों मिक्स करना है. Like a Maharashtra weather does not allow you to eat bajra in summers, but a Rajasthan weather allows you to eat bajra in summers because of the dry weather over there. So it's easier to digest. यहाँ पे humidity इतनी high है कि you can't digest bajra. You may have 4, 5 proper meals in Rajasthan or their dry area because the digestion is very high and their water is very good to water has digestive properties. But in a high humid climate like Mumbai, Pune, or probably Bangalore, cities like that, they cannot accept lot of because of humidity. They cannot accept lot of heavy grains. So I think हुँ, just understand your body. The moment you ओके. understand your body and you know कि ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है उतने में पता चल जाएगा. And secondly, always eat 2 bites less. I think that's the best formula that you can always apply for any kind of food. Whatever you're eating, have 2 bites. Stop before your stomach gets completely full. हुँ, In ओके. yoga, maybe same, mitahar. It's about stopping yourself just 2 bites before. You're keeping your stomach empty at least 25% is a bit too much to ask for nowadays, but at least 15%. या वी लाइक इवन अगर मैं भी खाने बैठती हूँ ना तो मुझे पता है कि थोड़ा-सा खाली रखना चाहिए पेट, बट लगता है यार अभी भरा नहीं है, खा लो. ये थॉट कोई आता है बात अपने नहीं. में. कुछ टाइम छोड़ दो. आधे घंटे बाद वापस खा लो. पर उस अच्छा. टाइम भरो मत. हुँ, हुँ. यू कैन हैव द सेम थिंग आफ्टर 1 आवर जब भूख लग जाती है. पर उस टाइम ये मत सोचो कि अरे भरा नहीं के चक्कर में. हाँ. इट्स लाइक दैट गेम ऑफ ऊनो विच वी ऑल हैव प्लेड. सेकंड लास्ट कार्ड पे अगर ऊनो नहीं बोला ना तो कार्ड उठाना पड़ता है एंड देन द गेम बिगिंस. हुँ, सो अगर सेकंड लास्ट कार्ड पे बोला नहीं ना कि ओके आई एम डन विद फूड देन दैट क्रॉसिंग ऑफ ओवर ईटिंग इज अ वेरी थिन लाइन. हुँ, हुँ. फिर तो 2 बाइट एक्स्ट्रा खाती वो एक्स्ट्रा भी हो जाए. ओके, गॉट इट. तो फूड के बारे में आपने हमें बताया, और अब थोड़ी-सी बात हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस की और कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला भी था कि हमारे पास मान लो एक प्रोजेक्ट है कि 3 घंटे लग के करना है। बट ये भी कहा जाता है कि 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में उठ के 5 मिनट वॉक कर लो, है ना? या उठ के कुछ कर आओ। और भी ऐसे क्या लाइफ़स्टाइल चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे बोन्स थोड़ी और इफ़ेक्टिव रहें? एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज होगा कि आप दिन में एटलीस्ट 4, 5 बार नीचे बैठ के कुछ काम अच्छा। करें.
इफ यू आर इन ऑफिस ऑब्वियसली आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बट अगर आप घर पे हो तो नीचे बैठ के खाना खा लो, नीचे बैठ के टीवी देख लो, नीचे बैठ के बातें कर लो। हॉल में सोफा के बदले सोफा के पास में ही नीचे बैठ जाओ। हम्म। जस्ट इन द होल डे आप कुछ ना कुछ 4-5 बार उठो और बैठो। दैट itself is very good. It's very good for your knee health. अच्छा, ओके। Very, very good for your joint and knee health. So just having the habit, and एक बार आदत पड़ने की बात है, फिर ऐसा होगा कि आप कहीं पे भी होगे आप नीचे ही बैठ जाओगे. You will हम्म। prefer sitting down, you know, than to be sitting on top. The moment you put that habit. हम्म। So this is one lifestyle change that you can do. Secondly, trying to do breathing practices every day, even if it's for 5 to 10 minutes. They are excellent, not directly to bone health, but indirectly they are very, very good for the whole body. So generally, also the body comes around after doing the breathing practices. Then some more changes that you can do in lifestyle is always have hot water before sleeping in the night. Try and sip हम्म। hot water. That keeps that little warmth in the body. So वो body सुबह बहुत इतना stiffness से नहीं उठते हैं. जैसे like rainy weather, you will feel that the bones are a little more या। stiffer. Many people sleep in the AC through the night, so in the morning they feel that थोड़ा tightness है, stiffness है body में. या हम्म। बहुत जनों को सिर्फ मॉर्निंग स्टिफनेस जिसको हम बोलते हैं, लाइक इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, मॉर्निंग में बॉडी ज्यादा स्टिफ रहती है. हम्म। When they get up and they, so just having little warm water, hot milk or something, a hot beverage, a hot green tea, whatever in the night before sleeping, like a sipping hot tea, not like warm lukewarm, like sipping hot tea. This is something good that you can do. Practicing Vajrasan every day after meals. So if it's possible, do it after breakfast and dinner. If it's not possible, sorry, lunch and dinner, but if lunches are not possible because if you're out, definitely after dinner, but on the floor, on a mat, like on a carpet, not on the bed or not on the sofa. Start with 1 minute, 2 minutes, move on to 10 minutes of Vajrasan. Again, very good for your lower body strength, lower body joint mobility. Your ankles will never pain. You'll never have ankle issues. You'll never have heel issues. You'll never have, the shin problem, thighs, knees. If by just sitting 10 minutes in Vajrasan after dinner, your lower body limbs will be really more supple and more open. Glutes बहुत अच्छे रहेंगे just by sitting in Vajrasan. So these are small changes that you can just do it every day. Like having hot water is very easy. Sitting in Vajrasan, anyways, after dinner, most of us sit with families or watch TV or do something. So Vajrasan कर लो. See, नीचे ऊपर, 5-6 बार नीचे बैठ के उठ जाओ. Those kind of things. Have peanuts for calcium intake, for protein intake. पनीर. हफ्ते में 3 दिन पनीर खाना चाहिए. ओके। Yeah. वाओ! सो आई वाज़ लिसनिंग एंड आई वाज़ लाइक ओके, ओके, मतलब मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे थे, तो मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं थी, हम लोग ज़मीन पे Yeah. बैठकर ही खाना खाते थे। सारे किचन से बर्तन, वो कढ़ाई, कुकर सब लाके हाँ. ज़मीन पे सज जाते थे एंड वी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट। कोई दरी-वरी कुछ भी नहीं बिछती थी। मेरी दादी के यहाँ भी यही होता था, दादी के यहाँ तो किचन भी ज़मीन पे ही थी। एंड शी यूज्ड टू स्क्वाट 60s की एज में भी शी वाज़ ईज़िली स्क्वाट, वो बैठे-बैठे स्क्वाट किए-किए वो चल भी लेती थी किचन में, शी कुड मूव अराउंड द किचन Yeah. ईज़िली। और अभी भी जैसे होता है ना कि अब डाइनिंग टेबल पे बैठ गए या कभी थॉट आता है कि चलो आज नीचे बैठ के खाते हैं, देन वी आल्सो फील अनकंफर्टेबल कि पैर ऐसे रखें या ऐसे रखें बिकॉज़ बॉडी की आदत आदत है. नहीं रह गई है। आदत. तो आई एग्री विद करेक्ट. यू कि जो हमारी पुरानी प्रैक्टिसेज़ हैं उनको वापस लाना पड़ेगा बिकॉज़ मैंने अपने दादा-दादी जी को देखा है, मेरे दादाजी इज़ नाउ 88 years old and Wow. he's still like he can walk, he can sit on the ground. तो Yeah. It's मतलब हम amazing. लोग And how we see even the young adults sitting on chairs, they're not able to sit on the ground now. हुँ, हुँ, I mean, at this age also they're not able to because of the stiffness. या उनसे नीचे बैठा ही नहीं जाता है. हम योगा में पहले the biggest challenge for them is to do 10 minutes of pranayama sitting on the mat without a wall support. That's so यस, tough. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी। मैं जैसे अगर मुझे भी ना पालती लगा के स्ट्रेट बैठना होता है तो मुझे लगता है कितनी देर और बैठना है, पैरों में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, स्पाइन में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फील होने लगता है। आई हैडंट Correct. सीन दिस थिंग विद ओल्डर पीपल। Yes. And it's so comfortable with them. They are so much at ease sitting down. In fact, वो बोलते हैं हमको चेयर टेबल नहीं पसंद, हमको चेयर हुँ। और सोफा पसंद है. It's just about mobilizing. So don't think it as कि हम पुराने जमाने की चीजें वापस ला रहे हो something like. It is just to या। mobilize your tiny joints get mobilized when you sit up and get up, sit down and get up, sit down and get up. बहुत सारे छोटे छोटे joints mobilize हो जाते हैं. That's about it.
ओके। तरीके से एक्सरसाइजेज ही हो गई, ऊपर बैठना नीचे बैठना, जैसे स्क्वाट्स करते हैं उस तरीके का हो गया, या फिर आपने वज्रासन बोला। और क्या कुछ और ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो ये हमारे बोन हेल्थ के इश्यूज हैं, जॉइंट का इश्यूज हैं? So for bone health and for musculoskeletal, always try and do massages. हम्म। मतलब once a week massage body में कराना चाहिए. It's very effective not only for musculoskeletal but a lot of health issues automatically get sorted. Proper Ayurvedic oil के साथ या coconut oil के साथ, and not every time it's possible to go to the spas and do it every week, but हम्म। getting some malish wali kind of person at home and just to get your body oiled nicely, and उसमें भी कम कम ऑयल नहीं, अच्छे से ऑयलिंग होनी चाहिए. पर अच्छा। उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगना चाहिए बाथरूम में. So keeping like nicely oiling the body, massaging the body, staying with like that for half an hour, letting how much ever oil to get soaked in, and बाकी का जो excess है वो वैसे ही wash out हो जाएगा, and then going for a shower. So just by this simple massage, which is like an Ayurvedic massage करवा लो या regular मालिश करवा लो, is very very effective to keep bone health. It's very good to, in fact, keep your blood pressure lower, get your cells to open up nicely, your pores to open up nicely, better oxygenation. Lots and lots of residual positive impacts are there with the massage. So that is one thing which you should do every time. Also keep moving the small joints. Generally क्या होता है ना, अब जैसे लेफ्ट साइड हम बहुत कम काम करते हैं. A person who is हम्म। righty, फोन भी राइट से उठाएंगे, पेन भी राइट से उठाएंगे, बर्तन भी राइट से उठाएंगे, कप भी राइट से उठाएंगे, सब कुछ राइट से करेंगे. Try and use the left side. So if you suppose I'm holding the phone on the right side, I can easily talk for an hour and a half on the phone on the right side. Try and hold it on the left side and talk. Within 10 minutes, you'll be like tired and you'll want to take it on the right side. हम्म। So like these small, small things, start using the opposite side more. Legs we mostly use, the lower body we mostly use equal. But upper body में हमारा left side थोड़ा हमेशा little weaker है. Or whichever is your non-active side. If you're a हम्म। lefty, obviously your right side is little non-active. So try and do things with the left hand. Also, when you do from the non-active hand, you are taking time to do a mind-motor coordination. हम्म। It will become a reflex actions from the active side, but it will become a mind motor coordinated actions from the non-active side. अगर मेरा लेफ्ट साइड इनएक्टिव है तो मेरे को उससे काम करने के लिए थोड़ा सा 1 सेकंड का थॉट करना पड़ेगा, और वही अगर राइट साइड से वही काम करना है. ऐसे सपोज सपोज हैव टू पिक अप समथिंग हॉट फ्रॉम द गैस. गरम तवा, गरम कुछ उठाना है मेरे को. अगर मेरे को वो पकड़ से उठा के लेफ्ट साइड से उठाना है, मैं 1 सेकंड लगाऊंगी पकड़ को पकड़ने में, 1 सेकंड लगाऊंगी पकड़ को लगाने में, फिर उसको फ्लिप करूंगी और फिर उसको उठाऊंगी. वो एक एक हम्म। सेकंड का माइंड मोटर कोऑर्डिनेशन काम होगा, जो कि राइट साइड में अगर मेरा एक्टिव साइड है तो आप कब बात करते करते इन अनकॉन्शियसली कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब किया है. हम्म। So that is also very good to keep your mind alert in terms of mind motor. With a lot of health issues, there's a lot of mind motor coordination which is dropping with as we are aging. इसीलिए लोग भूलते बहुत ज्यादा है, नाम भूल जाते हैं लोगों का, चेहरा भूल जाते हैं. अरे इसको कहीं देखा है, कहीं देखा है, हम्म। कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है पता नहीं. अरे इसका क्या नाम है, क्या नाम है, अरे एकदम मुंह पे है पर आ नहीं रहा. That's because there is no work on the mind. Mind is becoming slowly more and more calmer and duller. कि उसको कुछ सोचने का काम ही नहीं है, सब कुछ एट द बटन, सब कुछ डिजिटल है. सो हम्म। जस्ट बाय डूइंग ऑन द इनएक्टिव साइड से थोड़ा काम करने से ना माइंड को थोड़ा सा एक रोज का एक एक सेकंड का स्टिंकर मिलता है कि इसको सोचना है, उसको सोचना है, उसको सोचना है, उसको सोचना है. हम्म। Automatically memory also gets sharp. So all this together works a lot on the bone health. The entire body becomes a little bit more stronger. So, I have been enjoying this conversation a lot, and we have talked about a lot of practical stuff. Now it's time for a little bit of sassy stuff. तो सैसेट आपका टाइम है, और शशि, आई वांट टू आस्क यू, बहुत से लोग ऐसा कहते भी हैं, मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती हैं कि अरे एज के साथ तो हड्डियां कमजोर होती ही हैं, डिटेरियोरेशन तो होना ही होना है, कुछ भी कर लो, ज्यादा परेशान नहीं होना है. जैसे आपने भी बोला कि लोगों की पेन के साथ रहने की आदत पड़ गई है, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, डीजेनरेशन अपने हाथ में नहीं है. वो तो हम एज के साथ डीजेनरेट होंगे, पर हम्म। डिटोरिएशन हमारे हाथ में. हम्म। दोनों में फर्क. तो डीजेनरेशन का कोई चॉइस नहीं है. बॉडी विल एज, बॉडी विल फाइनली बिकम ओल्ड, सब कुछ होगा. पर डिटोरिएट होना या नहीं होना वो हमारे हाथ में है.
एक मैं सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। जैसे आपने एक सब्जी बनाई है, ठीक है, आपने अभी फ्रेश बनाई है, आपने फ्रेश कंज्यूम की, बहुत टेस्टी लगेगी। आपने उसे 2 घंटे बाहर रख दिया, थोड़ी टेस्ट में चेंज हो जाएगी। रात तक बाहर रख दिया, थोड़ी टेस्ट में और चेंज हो जाएगी। सुबह तक बाहर रख दिया, थोड़ी ज्यादा खराब हो जाएगी। दोपहर तक शायद खाने लायक ही नहीं बचेगी, आपको वो फेंकनी पड़ेगी। वही अगर अगर आपने सब्जी बनाई और उसको इमीडिएटली फ्रिज में रख दी, तो शाम तक भी उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, नेक्स्ट डे सुबह तक भी उसका टेस्ट अच्छा रहेगा। एंड शायद वो खराब भी होगी तो 1 या 2 दिन के बाद। Hmm. गॉट, सब्जी वही थी, उसका डीजेनरेशन प्रोसेस भी वही था, Hmm. राइट। पर फ्रिज में रखने से हमने उसको डिटूरिएट होने से बचा दिया, बाहर रखने से हमने उसको डिटूरिएट होने दिया। सो सब्जी की शेल्फ लाइफ उतनी थी, Hmm. डीजेनरेशन प्रोसेस उतना ही था, पर क्योंकि हमने उसका ध्यान रखा तो वो डिटोरिएट जल्दी नहीं हुई। तो द सेम वे, बुढ़िया सॉरी बुढ़िया, हड्डियां कमजोर होगी, जैसे हम बुढ़े होंगे हड्डियां कमजोर होगी, अग्रीड। पर हम उसका अगर ध्यान रखें तो वो हमारी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जैसे हमारे घर में बहुत सारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, दादीज नानीज हैं, जो अभी भी बहुत एक्टिव है एट द एज ऑफ 90, एंड सो यू लुक एट देम एंड यू से वाओ, एट 90 दे आर सो एक्टिव, दे आर सो गुड। उनकी बॉडी कंप्लीटली डीजेनरेटेड है, पर उन्होंने डिटोरिएट नहीं होना है। Hmm. And Shashi, do you also have some books, recommendations, or maybe some websites or something where we can educate ourselves a little bit more? Well, I would say that there is so much of overload of information on Google. There is Hmm. so much of education available that I would request all of them to step down and not educate Mhm. themselves and just listen to someone and apply it as the information is coming, rather than applying our own logic and brain on it. Hmm. जैसे मैं जब योगा क्लास लेती हूँ तो आई नो कि मुझे कितना स्ट्रेच करना है, Hmm. एंड सम स्ट्रेचेस में आई टेल देम गो ऑल आउट एंड डू इट, Hmm. बट स्टिल 80% ऑफ द क्राउड विल नॉट गो ऑल आउट, बिकॉज उनका लॉजिकल माइंड बोलेगा नहीं नहीं उसको बोलने में क्या होता है, मेरे को पता है ना मेरा बॉडी कैसा है। Uh, बट मैं एज अ योगा टीचर आपकी बॉडी के अंदर तक देख पा रही हूँ, आप सिर्फ फिजिकल लेवल पे देख पा hmm. रहे, बट वी डोंट रेस्ट दैट फेथ 100%. So there is an Hmm. information overload. Even if I give you books to read, you will read the books not as the author is telling you. You will read the book as the author is telling you, and yeah, use your logical mind, apply your little bit of information knowledge that you have gathered, and then make a cocktail out of it. So I think most of the time ignorance is bliss. So sometimes जब जो जैसे मैं बोलती हूँ सिर्फ have faith and just drop. In many of my postures I tell you just छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, drop back. नहीं ड्रॉप बैक होता है, क्यों? क्योंकि दिमाग आ जाता है। Yeah. Yeah. या, So it's better to go to an expert and discuss your issues with them, and they will understand your body. उसके बाद आगे काम होता एंड है. देन गिव योर फेथ टू देम that they will do Hmm. it. Very important. And Hmm. or the best thing that you can do is instead of looking at things outside, your body is a separate body. Look at what your needs are, what your body requirements are. Why is your pain triggering here and is getting okay here? So let's, अगर पढ़ना ही है तो अपने आप को पढ़ो, अपने Hmm. आप को समझो. That's the best study that we can do. Okay, understood. So, Shashi, was a really enlightening conversation. And before I let you go, I'd like to know a little more about the work you do. So, please tell us briefly कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हो और वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं. Sure. So basically, I'm into the field of yoga since the past 13 years. I'm a yoga teacher, instructor, and therapist. I specialize in spine care, where I work on people one on one, where I try and understand their problem. These are one on one sessions where we work on the spine, the back pain, or any kind of pain in the body. And it takes approximately 4 to 8 sessions, happens over the period of 2 to 3 months, where we work on therapeutic yoga, therapeutic pranayam, a lot of mental work to be done. There are a lot of mental blockages which don't allow the pain to get completely released. So work on those mental issues and strengthen that area in such a way that in spite after you are out of the session, even if there are any kind of impressions, any kind of stress, any kind of jerks in that area, your back is completely healed.
or your Mm-hmm. area of pain is completely healed. So I help them break free from their lot of mental inhibitions which are leading to physical pain. A lot of work on their physical self as well as an attitudinal shift. So it's a complete holistic package. Depends on the intensity and the gravity of the pain we work on the people. Then cases like slip disc, people have recovered completely. So there was one lady who was a badminton champion, and उनका एक ही ड्रीम था कि मुझे वापस कोर्ट पे पहुंचना है. So she had slip disc. So it again took me around 3 months to work on her to get her entire fear out of. There was a lot of fear psychosis there because the pain was so intense that under no conditions she wanted to go back to the pain. So again, curing this, the slip disc, the disc prolapse, the nerve pinch, everything, and then bringing her back to that understanding that you can go and you can go and play badminton in the court. So within 3 months, she was in the court playing her championships again. Mm-hmm. So So this you provide your simple, services in person. yeah, these are all one-on-one services because they are tailor-made exactly like what your pain issue is and how we can heal you around that. Because there's no one size fits all. So these are personal sessions, and then only will they Mm. benefit. Yeah, okay. And how can people connect with you? They can connect with me on my telephone number, email me, or connect me on my Instagram page. My page is Yoga by Shashi. So you can DM me over there. You can WhatsApp me on my number or email me and you can connect with me. Take an appointment. We'll do one appointment of discovery call. Mm-hmm. Okay, wonderful. Thank you so much, Shashi, for your time and for your insights for our listeners. Thank you so much, Maitri. It was really wonderful. बहुत मजा आया बात करके मुझे भी. and बहुत अच्छा लगा सब सब चीजों को हमने टच किया. It was nice. And I just hope जो सुन रहे हैं वो अगर इसमें से कुछ भी ले सके it will be an honor for me. It would be great कि हमारी ये conversation किसी के काम आए. अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूबल लगा तो प्लीज हेल्प लिटिल फिक्सेस रीच मोर पीपल बाय शेयरिंग इट विद समवन यू केयर अबाउट. यू कैन ऑल्सो गिव अस अ शाउट आउट ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है @littlepixelspodcast. दिस हेल्प्स मी इन ग्रोइंग द पॉडकास्ट और बहुत सारे और लोगों की हेल्प भी होती है इसको सुन के. आई एम ग्रेटफुल फॉर योर टाइम. अब मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.